Assalamu alaikum, dear students, and welcome to the Slate class of Physics O levels. In this class, we will continue with the chapter of lens. Right? Before this class, you have to attend the previous video of lens, जिसमें आपको lens का introduction cover करवाया गया. Right? In the previous video, we got to know about the two types of lens. One was converging lens और convex lens, जो कि center से thick था और center से thin था. इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो लेंस नजर आ रहा है दिस इज कन्वेक्स लेंस राइट सो दिस कन्वेक्स लेंस converges all the light at a single point and that single point is called focal point or principal focus and the other type of lens was diverging lens and that is also called concave lens right concave lens center से thin और side से thick होता है और वो light को disperse करता है लाइट को स्प्रेड आउट करता है लाइट को डाइवर्ज करता है ठीक है प्रीवियस वीडियो में वी गॉट टू नो अबाउट सर्टेन टर्मिनोलॉजीज इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एक्सिस which is a line that passes from the center of lens then we got to know about optical center right and then we had focal point or principal focus and focal length ठीक है so here we have a convex lens and we will see the rules of convex lens for the ray diagram right? So convex lens is also called converging lens. We have to learn three rules of convex lens. So you are writing three rules. So basically what we have to understand in this part is what happens to the rays of light when they pass through lens. So to understand this, हम तीन rays draw करेंगे before passing from lens and after passing through lens. So the rule number 1 is मैं इस स्पेस को स्प्लिट कर देता हूं so that हम यहां पर रूल्स लिख सकें so इस लाइन के लेफ्ट साइड पे आई विल राइट what is happening to the light before it passes through lens and what happens to the light after it passes from lens ठीक है so first rule is about the ray of light that is coming parallel to the principal axis. So here you have a ray of light which is parallel to the principal axis, right? So इसके ऊपर arrow draw करना जरूरी है because हर ray की पहचान ही उसके arrow से होती है. So this ray of light is incident on the surface of lens and it is coming parallel to the principal axis. So what will happen to this ray after it passes through lens? Because it is a converging lens, it is going towards the focal point and in fact this ray will pass through the focal point or principal focus. ठीक है? As you can clearly see that this ray is passing from principal focus after passing through lens. Right? So what is happening to this ray of light before it is incident on the surface of lens? It is coming parallel to the principal axis and after it passes through lens it passes from focal point or principal focus ठीक है after that let's have a look at second rule now there is a ray of light that is passing from the center point of lens what do you call the central point we call it optic center so we have this ray which is coming from optic center what will happen to this ray after it passes from lens but this ray will go straight without any change in direction ठीक है or you can call it is going undeviated and its direction is unchanged right so before lens it is coming from or it is passing from the optical center and as it passes through lens it goes undeviated there is no change in its direction ठीक है अनडेविएटेड का मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी एंड थर्ड एंड लास्ट रूल
the ray of light which is coming from the focal point before lens. जरा इस रे को ध्यान से देखें. So before passing from lens, it is passing from focal point. कौन सा वाला focal point? पहले वाला focal point. It is coming from the focal point. रे के ऊपर arrow draw करेंगे. And what happened to this ray of light as it passes from lens? It becomes parallel to the principal focus. So have a look. ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. It will become parallel to the principal focus. Right? So what is happening here? Before passing from lens, this ray is coming from or passing from the focal point okay, and as it passes from the lens it becomes parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis. So बच्चों अगर आपको ये तीन रूल याद होंगे आपकी रे डायग्राम फॉर द कन्वर्जिंग लेंस कभी भी गलत नहीं होगी. Let's revise all these three rules. So what is first rule? First rule is if the ray is coming parallel to the principal axis, after passing from lens, it passes or it converges at the focal point of lens. ठीक है? It is coming parallel to the principal axis and after passing from lens, it is passing from the focal point. ठीक है? So here is the focal point जिधर से ये pass हो रही है. What is the second rule? The second rule is if the ray of light is coming from the optic center, right from the middle point of lens, after passing from lens, there will be no change in direction. ये straight गुजर जाएगी. ठीक है? So you can say see कि ये पहले optic center से pass हो रही है and passing from lens, it is going undeviated. There is no change in its direction. Right? And the third and last rule. This is the third rule that if the ray is coming from focal point before it passes from lens, after passing from lens, it passes or it becomes parallel to the principal axis. So you have to memorize these three rules, right? So continuing with this, अगर आपको ये तीन rules आ गए हैं, इनको याद कर लें. So basically rules हैं दो ही. जो first rule है और third rule है ये एक दूसरे के reverse rules हैं. मतलब कि first rule में the ray is parallel before passing through lens. थर्ड रूल में इट बिकम्स पैरेलल आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेंस. ठीक है? मतलब अगर फर्स्ट के एरोस को रिवर्स कर दिया जाए वो रूल नंबर 3 के एरोस आ जाएंगे. कैसे? कि अगर मैं इसके एरोस को रिवर्स कर दूं फर्स्ट के कि इट इज कमिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट एंड आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस इट इज बिकमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है? लेकिन हमने इनको दो सेपरेट रूल्स की तरह ही याद रखना. सो दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स. अब रे डायग्राम डिफरेंट यूजेस के लिए डिफरेंट रे डायग्राम्स है. फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f भी प्लेस करेंगे, एट 2f भी प्लेस करेंगे, बिटवीन f एंड 2f भी प्लेस करेंगे, राइट एट फोकल पॉइंट भी प्लेस करेंगे एंड विद इन फोकल पॉइंट भी प्लेस करेंगे. और हर रे डायग्राम एक दूसरे से डिफरेंट होगी और उसका फिजिकल यूज और उसकी एप्लीकेशन भी डिफरेंट होगी. राइट? सो starting with the ray diagrams of converging lens, we have case 1 in which object, which is represented by a boy in this case, is beyond 2f. Right? The object is boy in this case and he is positioned beyond 2f. Lens से अगर start हो तो पहले focal point, फिर focal point का double distance, focal length का double distance is 2f और object उससे भी पीछे है. सो ऑब्जेक्ट जनरली रिप्रेजेंट होता है बच्चों सिंपली एक अपराइट एरो से. ठीक है? लेकिन इस चैप्टर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ बॉय ही प्लेस कर दिया है. ठीक है? सो इसको अंडरस्टैंड करें कि ये तो फर्स्ट केस है ना. इससे आगे आने वाले केसेस में हमने 5 केसेस में ऑब्जेक्ट को अभी तो हमने बियॉन्ड 2f प्लेस किया. ठीक है? इन केस नंबर 2 वी विल प्लेस ऑब्जेक्ट राइट एट द फोकल पॉइंट, sorry 2f, and then we will place an object between f and 2f. कितने केसेस हो जाएंगे? 3. और उसके बाद we will place the object right at the focal point and then we will place an object between optic center and focal point. ठीक है? So count करें ये lines 1 2 3 4 5.
ठीक है, ये 5 डिफरेंट केसेस के लिए 5 डिफरेंट रे डायग्राम्स और 5 डिफरेंट यूजेस। ठीक है, सो बेसिकली इनको आप मेमोराइज करने की बजाय अगर रूल्स पे फोकस करेंगे तो आपकी कभी भी मिस्टेक भी नहीं होगी और चीजों को मेमोराइज करने से भी बच जाएंगे। इनफैक्ट 3 रूल्स याद रख लेंगे तो आपकी रे डायग्राम कभी भी गलत नहीं होगी। So, how many rays you can draw to form an image? You can draw at least 3 rays. वैसे 2 से भी इमेज बन जाएगा, लेकिन अगर आप 3 रेज ड्रॉ कर लेंगे तो आपका आंसर भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सो 3 रूल्स माइंड में रखेंगे। A ray coming parallel to the principal axis after it passes from lens, it becomes converging and it passes from the focal point. Rule number 1. What was rule number 2? When the ray is coming from the optic center, it goes undeviated. And rule number 3 is if it is coming from the focal point after passing through lens, it becomes parallel to the principal axis. Right? Okay, now we have to draw a ray diagram. For that, we will draw 3 rays before lens and 3 rays after the rays are passing through lens. So we will initiate all the rays from a single point at that, and that single point is this point on the head of this boy. ठीक है, हमने यहां से 3 रेस को ड्रॉ करना इनिशिएट करना है। राइट, सो रूल नंबर 1 के हिसाब से फर्स्ट रे को ड्रॉ करते हैं और एक चीज आपने भूलना नहीं है, हर रे के ऊपर एरो जरूर प्लेस करना है, वही उसकी डायरेक्शन को इंटरप्रेट करेगा। सो फ्रॉम दिस स्पॉट this ray of light is coming parallel to the principal axis, right? What will happen to this ray of light as it passes from lens? Yes, this ray of light will pass right from the focal point of lens. Have a look. So ray will be something like this, and you can clearly see that it is passing from focal point. ठीक है, it is passing right from the focal point. ठीक है, second ray draw करें, शाबाश. So here you have a second ray, and this ray is coming from the same very point, that is the head of this boy, and it is coming from the optic center of lens. मैंने इसको रेड कलर की रे से रिप्रेजेंट किया है। हर रे को दूसरी रे से डिफरेंशिएट करने के लिए मैं उसका कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, लेकिन कीप इन माइंड कि आपने सारी की सारी रेज एग्जाम में पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ठीक है, एग्जामिनर की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, जो भी डायग्राम होगी आपने रूलर और पेंसिल से ड्रॉ करनी है, और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो पेंसिल से ड्रॉ की होगी तो आप उसकी करेक्शन भी कर लेंगे ना। ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दिस रे आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेंस? Rule number 2 was if the ray is coming from optic center, it will go undeviated. तो इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा. It will go straight like this. There is no obvious change in its direction. So now we have a point where image is formed. ठीक है, जहां पे ये दो रेस कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इमेज इज फॉर्म्ड राइट एट दिस पॉइंट. ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, जब भी सॉलिड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज विल बी ऑलवेज ऑलवेज अ रियल इमेज. मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया था व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज. रियल इमेज इज द वन विच इज कॉट ऑन द स्क्रीन. फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्रोजेक्टर से इमेज फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉट ऑन द स्क्रीन ऑफ प्रोजेक्टर. ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल जो कैमरा में इमेज कैप्चर करते हैं वो कैमरा की इंटरनल स्क्रीन पे या आई वाला इमेज आपके रेटिना पर फॉर्म होता है, दैट इज रियल इमेज. लेकिन अगर आप मिरर से इमेज फॉर्म करते हैं, दैट इज वर्चुअल इमेज, बिकॉज ना तो उसमें रेज एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं बिकॉज वो डाइवर्जिंग रेज होती हैं एज यू नो फ्रॉम रिफ्लेक्शन, और दूसरी रीजन ये है कि उसको स्क्रीन पर आप कैच नहीं कर सकते. सो बेसिकली इस केस में रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ रियल इमेज. बट एक और रे ड्रॉ कर लेते हैं using the third rule, and that rule was if the ray is coming from the focal point, what will happen to that ray after passing from lens? Have a look. This is a ray of light which is coming from the focal point before it passes from lens. It is passing from focal point. ठीक है, हर रे के ऊपर एरो जरूर लगाना है. After it passes from lens, it will become parallel to the principal axis.
So have a look, have a close look. It is becoming parallel to the principal axis, right? So you can clearly see that all three rays are intersecting at a single point, and here you have that single point. ठीक है, याद रखना एग्जाम में इमेज को शो करने के लिए आप इस तरह से एरो शो करेंगे, लाइक दिस, ठीक है, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस और एंड होगा एट अ पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने इस एग्जांपल को थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाना था, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट बॉय है तो इमेज भी बॉय ही होगा। So here is the image coming. So image will be something like this. ठीक है? So image is much smaller in size and it is formed between F and 2F. ठीक है? This is point F. This is point 2F. When the object is beyond 2F, याद रखिएगा उस केस में image is formed between F and 2F. Image is formed between F and 2F. Now what are the characteristics of this image? सारी की सारी रेज एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है। सो दिस इमेज इज अ रियल इमेज, ठीक है। बॉय अपराइट है और इमेज जो है उसका रिवर्स हो गया, इन्वर्ट हो गया, सो दिस इज कॉल्ड, इट इज एन इन्वर्टेड इमेज। अपसाइड डाउन हो गया ना, इट इज एन इन्वर्टेड इमेज। एंड इज इट सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट या लार्जर इन साइज या स्मॉलर इन साइज? दिस इज स्मॉलर इन साइज एंड दिस इज कॉल्ड diminished. This image is diminished. इसका मतलब है this image is smaller than object, right? So you have to memorize these three key features of the image formed by by refraction from the lens. It is real, it is inverted, and it is smaller in size, which means it is diminished. देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कार को देख रहे हैं, कार एक लार्जर ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन वी कैप्चर द होल इमेज ऑफ कार इनसाइड आवर आईज, ठीक है। सो दिस इज द केस व्हिच इज यूज्ड इन ह्यूमन आई, ठीक है। जब आप एक लार्ज बिल्डिंग की या लार्ज ट्री की फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर कैप्चर करते हैं और सारी की सारी पिक्चर का जो इमेज है वो विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द कैमरा, हाउ इट इज पॉसिबल? ऑब्जेक्ट इज लार्जर इन साइज, image is smaller in size, ठीक है। so this is also used in camera, ठीक है। so these are the two basic uses जो आप याद रख सकते हैं। when the object is beyond 2f, image is formed between f and 2f. this is real image, this is inverted image, and this is diminished, right? and its major uses are in human eye and in camera, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे रेटिना के ऊपर आई के अंदर एक पॉइंट होता है व्हिच इज कॉल्ड रेटिना, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, सो व्हाई वी आर सीइंग देम अपराइट? एक ऑब्जेक्ट का इमेज इन्वर्ट बना तो हमें अपसाइड डाउन क्यों नहीं नजर आता? जस्ट बिकॉज हमारे ब्रेन के एल्गोरिदम्स, हमारे ब्रेन के प्रोसेसेस उसको प्रोसेस करते हैं और उसको अपराइट करके हमें इंटरप्रिटेशन देते हैं। सो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस सेट बाय अल्लाह, राइट? So this is the first case of image formation in convex lens. Let's move on to the second case. As you know that in this video we will continue with the image formation using convex lens. So for this video you have to see the previous two parts of lens, right? So let's move to the case number 2 of the ray diagram using convex lens, in which we will place an object right at 2f, ठीक है? And generally ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, ठीक है। केस नंबर 1 में हमने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया था विद अ बॉय, लेकिन एग्जाम में तो बॉय नहीं ना बना होगा, एग्जाम में तो एरो बना होगा। सो इन दिस केस वी आर रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एरो, ठीक है।
आपने इस केस में इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है twice the distance of focal length, right? This distance is 2f. So you have to follow all three rules of ray diagram to point out where the image will be formed. What were the three rules once again? The ray that is coming parallel will pass from focal point after passing through lens. So have a close look. So this is the first ray which is coming parallel to the principal axis. What will happen to this ray as it passes from lens? This ray will pass right from the focal point. ठीक है, आपने रूलर को इस तरह से एडजस्ट करना है so that this ray is passing right from the focal point of lens and this is how it goes. ठीक है, this ray is parallel to principal axis but after passing from lens it is becoming converging and it is passing from the focal point. ठीक है, before lens it is parallel, after passing from lens it is passing from the focal point of lens, right? So what was rule number 2? The ray passing from optic center goes undeviated. ठीक है, so red color से एक next ray draw कर रहा हूं. This ray is passing from focal point. ठीक है, and after it passes from lens there is no change in its direction, it is going undeviated. ठीक है, रे के ऊपर एरो लगाएंगे here and here. आपने पहले भी एरो लगाना है और लेंस से पास करने के बाद भी इसके ऊपर एरो प्लेस करेंगे. ठीक है, ओके. एंड द थर्ड एंड द लास्ट रे, जस्ट टू कंफर्म, वैसे तो आपको पता चल गया कि इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है, बट जस्ट टू कंफर्म कि थर्ड रे भी इसी इंटरसेक्शन से पास कर रही है. यू विल ड्रॉ थर्ड रे. फॉर दैट हैव अ क्लोज लुक. दिस इज अ रे which is coming from the focal point before it comes from the lens. What will happen to this ray as it passes from lens? Yes, this ray will become parallel to the principal axis. So this ray will become parallel to the principal axis like this. So the ray coming from the focal point becomes parallel to the principal axis as it passes from lens. ठीक है, now find out the point of intersection. Now you can clearly see that this dot is representing a point of intersection. So this is a point where the image is formed. है ना? So object is 2f. जरा सा गौर करें, आपको पता चलेगा image is also formed at 2f point. Object is at 2f, image is also formed right at 2f. ठीक है, सो इमेज के लिए आप एरो ड्रॉ करेंगे फ्रॉम फोकल पॉइंट फ्रॉम 2f इन फैक्ट, एंड दिस एरो विल बी इन्वर्टेड. इसका मतलब है कि इस केस में भी केस 1 की तरह इन्वर्टेड इमेज बना है. ठीक है, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इमेज? आप लोग लिखें प्रॉपर्टीज. This image is real because all the lines are intersecting at a single point and this image can be caught on screen. This image is inverted. और याद रखें, लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जितने भी रियल इमेजेस फॉर्म होते हैं सारे के सारे इन्वर्टेड होते हैं. ठीक है, अच्छा एक थंब रूल बता देता हूं. जब भी ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट से बियॉन्ड होगा, बेशक वो 2f पे हो, बेशक बियॉन्ड 2f हो, बेशक वो बिटवीन f एंड 2f हो, इमेज रियल भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा. बट राइट व्हेन इट कम्स टू द फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट या विद इन फोकल पॉइंट, तो आपका इमेज साथ ही वर्चुअल हो जाएगा और अपराइट भी हो जाएगा. सो द की थिंग इज all the images which are real are inverted as well. ठीक है, and this object and this image have same sizes, so you can write the image is having same size as of object. ठीक है, or I can say that object height
ऑब्जेक्ट हाइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू इमेज हाइट। ठीक है, आप बच्चों इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज ग्राफ पेपर पर ग्रिड होती है, लेंस को मेजर करना कंपैरेटिवली आसान होता है। ठीक है, सो यू विल सी दैट ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। ग्राफ पे आप रूलर से मेजर कर सकते हैं या डिवीजन से भी मेजर कर सकते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट? आप सोचेंगे किस केस में आपको सेम साइज का इमेज चाहिए होता है। द यूज ऑफ दिस केस इज फोटोकॉपिंग मशीन। राइट, सो दिस केस इज यूज इन फोटोकॉपिंग मशीन। व्हाई? बिकॉज जब आप सेम साइज की कॉपी रिप्रोड्यूस करते हैं तो आपका रियल इमेज होता है और सेम साइज का इमेज होता है। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केस of image formation in converging lens, and now we can see that object is placed between focal point and 2f. ठीक है, object is placed between f and 2f. once again आपको वही तीनों rules use करने हैं and you will determine the position of your image. what is the first rule? once again अब आपको पता होना चाहिए कि ये हम थर्ड टाइम सेम रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो जो बच्चा जितनी बार इस रूल को अप्लाई करता जाएगा उसको याद भी हो जाएंगे और केसेस भी याद हो जाएंगे और रे डायग्राम बनाना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। सो प्रैक्टिस इज द की थिंग। दिस इज अ रे once again which is coming parallel to the principal axis. We all know by now that the ray which is coming parallel to the principal axis passes from focal point after passing through lens. ठीक है, so this ray will pass right from the focal point. This ray is passing right from the focal point. Arrows draw करेंगे. We are drawing arrow on each and every ray. ठीक है, अगर 3 rays draw किए तो 6 arrows होंगे. 3 arrows before the lens and 3 arrows after the ray is passing from lens. So it is becoming converging and it is passing from focal point. Right? Now the second rule. The ray coming from the ऑप्टिक सेंटर गोज अनडेविएटेड, उसकी डायरेक्शन कोई चेंज नहीं आएगा। सो हियर यू हैव अ रे व्हिच इज कमिंग फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर एंड आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेंस इट विल गो अनडेविएटेड। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ वी हैव टू ड्रॉ थर्ड एंड लास्ट रे, लेकिन आप देख चुके हैं कि आपका इमेज यहां पर फॉर्म हो चुका है। ठीक है, थर्ड रे भी इसी पॉइंट से पास करेगी। सो दिस रे इज कमिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट बिफोर पासिंग फ्रॉम लेंस। प्लेस एन एरो ऑन इट and as it passes from lens it will become parallel to the principal axis and it will be a horizontal line like this. Now you will point out a point where all these 3 rays are intersecting. So bachcho, this is a point where all these 3 rays are intersecting. So I forgot to place an arrow on the ray. इस एक रे पे एरो बनाना भूल गया था, तो एरो फौरन से डाल लें। ओके, नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो आप यहां पर एक इन्वर्टेड एरो ड्रॉ करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस pointing all the way to this position, and this is an arrow to represent an image. ठीक है, your image is formed beyond 2f. So I am writing in this case image is formed beyond 2f. Image is formed beyond 2f. ठीक है, 2f से दूर बनाए image. So what are the properties of image formed in this case? This image is real. ठीक है, बिकॉज सारी की सारी रेज एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस इज इन्वर्टेड एंड दिस इज enlarged, or you can say that this is magnified. ठीक है, एक ही मतलब होगा ना enlarge और magnify का, के ऑब्जेक्ट से लार्जर इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, and this is used in
प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिहाइंड द लेंस होता है, इनसाइड द प्रोजेक्टर एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज इज इन फैक्ट कॉट ऑन द स्क्रीन, दैट्स व्हाई दैट इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, लेकिन वो तो अपराइट होता है। सो बेसिकली उस केस में ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड होता है, इमेज जब री इन्वर्ट होता है तो अपराइट हो जाता है। ठीक है, एंड इट इज लार्जर इन साइज, और जितना डेफिनेटली प्रोजेक्टर से दूर जाते जाएंगे उस इमेज का साइज और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो इन केस नंबर 1, 2 and 3, object was placed beyond 2f, then it was placed right at 2f, and now it is placed between f and 2f. In all these three cases, image is real and inverted. अच्छा, जितना ऑब्जेक्ट लेंस के पास आया है उतना इमेज लेंस से पीछे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और जितना ऑब्जेक्ट लेंस के पास आया है उतना इमेज एनलार्ज भी हुआ है। ठीक है, इस केस में इमेज enlarged hai. Image is enlarged. So in these three cases we have seen that the real images are formed at different positions. So ये तीनों cases बच्चों आपको याद भी होने चाहिए। For example, कैमरा के केस में आपको पता होना चाहिए that object is placed beyond 2f and image is formed between f and 2f. Similarly, photocopying machine में object is placed at 2f and image is also formed at 2f. And in case of projector, object is placed between f and 2f and image is formed beyond 2f, right? In the next video we will discuss two more cases of image formation of convex lens, and those images will be virtual and upright images. Okay, so stay tuned for the next video. Thank you.